treatment. How can we treat a particular type of disease? Actually, when we're talking about the treatment, it has the two different steps. The treatment comprising the two different steps. ये इसे दो स्टेप में हमें कंप्लीट करना होगा. पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट लेवल जो है ट्रीटमेंट का, वो क्या होगा? देखिए, ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ ए डिजीज़. ये जब कोई बीमारी होती है, जब कोई रोग होता है, तो आप उसमें देखते हैं कि फीवर आ जाता है, हमारा कोई बॉडी का टिश्यू है उसे लॉस होता है, उसे डैमेज होता है, वो डैमेज हो सकता है. इस कारण से मेडिकेशन दैट विल ब्रिंग डाउन द फीवर, जो मेडिसन हम फीवर को कम करने के लिए, बुखार को घटाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स कहा जाता है. तो द फर्स्ट स्टेप इज़ द ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ ए disease, and it has again further it may be the three different steps. The first one is the medication that will bring down the fever, antipyretic medicines, and prevent the damage of tissue. This is the first. What is the second step? Taking medicines which will reduce the pain कम करना, दर्द को कम करना. सिविरिटी जो है, यही सिम्टम का जो दिखाई देता है पेन के रूप में, तो ये एनाल्जेसिक मेडिसिन लेंगे. एंड इन इन्फ्लेमेशन, दैट मीन्स द एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स लेना होगा. ये दो आपका स्टेप हुआ. इसमें फर्स्ट स्टेप का दो फर्दर स्टेप हुआ. और ये थर्ड वन इज़ द रेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स. काफ़ी समय तक के लिए रेस्ट करना ताकि हम अपने एनर्जी को कंजर्व कर सकें, है ना. तो ये रेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स टू कंजर्व द एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ ए डिजीज कंप्राइजिंग दिस थ्री डिफरेंट सब स्टेप्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप, नाउ व्हेन इट हैज़ बीन डायग्नोसाइज्ड that disease is caused by a particular type of a microbe or any other pathogens or any other organism. That means now the exact treatment will be started. That means to kill the microbes or the other agents. That means the treatment to cure the disease by killing microbes. That means by taking the medicines for the antibacteria, for the antiviral, for the other anti-pathogen agents. So this is the way of treatment. It is known as the principle of last part. Not last part, again there is a one more important part here in this principles of prevention, that is the immunity and the immune system and the vaccination. But before that, here is the principles of prevention. आपने ये मशहूर मुहावरा सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. दैट मीन्स हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एक्सपोजर्स ऑफ द पैथोजन. हम अपने आप को पैथोजन से किस तरह से बचाएं. अगर हम पैथोजन से खुद को बचा लेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगी. कोई प्रश्न नहीं उठता है कि हमें फिर मेडिसिन की ज़रूरत हो या किसी और दिक्कत या किसी और परेशानी का सामना हो. तो हाउ कैन वी प्रिवेंट आवरसेल्व्स from the exposure to pathogens? That is the best way. Here there is a many more thing in regard to that there are so many different types of infectious agents. There are different types of infectious diseases. They may be the airborne disease, they may be the waterborne, they may be the food contamination, and they may be with the vector. That is why by living in hygienic and good sanitary conditions, we can prevent the following infections. What are the types of infection? Depending upon the means of spread, that is the air, water, food, vector. So here is the airborne infections. By providing clean air, pollution free atmosphere, and uncrowded in living pathogen. Here is the nowadays in the previous class I have given you an idea about the COVID-19 and a short description to you. So this one is the first here. How can we prevent ourselves from that type of pathogens? So here is the best example here, airborne infection. By providing, we should clean our air by the
pollution free by atmosphere and uncrowded living pathogens. How can we maintain a distance? How can we wash our hands regularly? All these things are under this category. Now the next one is the waterborne infections by provision of safe drinking water which is free of any contamination. The third one is the food-borne infections by eating healthy. We may prevent ourselves from this type of infections by taking healthy, nutritious and microbe फ्री फूड. इसलिए तो कहा जाता है कि जो सब्जियां या जो और फल या और जो चीज़ें हम लोग अपने घरों पे लाते हैं उसे खूब अच्छे से वॉश कर लेना है बहुत अच्छे ढंग से. और अगर किसी नॉन वेज को अगर बना रहे हैं तो उसे खूब बेहतरीन से फ्राई कर लें. बहुत माने ज़्यादा उसको फ्राई करने की आवश्यकता है, उसे ज़्यादा अधिक से अधिक बॉयल करने की आवश्यकता है ताकि उसके अंदर अगर है माइक्रोब्स उसके सेल्स में है ना तो वो उसे मारा जा सके. तो ये हुआ एक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस बाय नॉट अलाउइंग द इंसेक्ट्स टू ब्रीड. ये आप जानते हैं कि जैसे कहीं पर पानी है, पानी माने बारिश हुई, गड्ढा था, पानी उसमें जम गया, अब वहाँ दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. So that means we have to clean our atmosphere. We should clean. We should keep our environment clean, our house, our surroundings, and that is the way to prevention. That is the measures of prevention, and that will prevent us from the different types of diseases.